वेलकम बैक टू कॉर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं क्लाउड सीडीएन लैब। सो लेट्स जस्ट क्लिक स्टार्ट लैब। नाउ ओपन क्लाउड कंसोल इन इनकॉग्निटो विंडो। Tutorial. Now on to the task one. We have to create a unique cloud storage bucket. So search bucket, click create। अब इधर नेम की जगह पे हमें ग्लोबली यूनिक नेम डालना है, तो यूनिक हमारा प्रोजेक्ट आईडी भी है, तो हम इसे कॉपी करेंगे एंड यहाँ डाल देंगे। देन ऐड अ डैश एंड देन बकेट, एंड ये हमारा एक यूनिक बकेट बन चुका है। अब हम वापस जाएंगे। इट्स इज लोकेशन टाइप शुड बी मल्टी रीजनल। यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल रीजनल है। नेक्स्ट, क्लिक कंटिन्यू, यानी कि हमें अब यहाँ आना है एंड इसको अनचेक करना है। नाउ यू हैव टू क्लिक क्रिएट एंड योर bucket is created. Now next you have to run this command in the Cloud Shell. So activate Cloud Shell by clicking on this icon. Authorize. क्लाउड शेल टर्मिनल के लोड हो जाने के बाद हम यहाँ वापस आएंगे एंड इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे एंड रन ना करके हम इधर से सबसे पहले इस पार्ट को रिमूव करेंगे। देन एंटर योर प्रोजेक्ट आईडी, देन ऐड अ डैश एंड देन बकेट। इन शॉर्ट ये आपकी एक बकेट आईडी बन जाएगी जो हमने बकेट जस्ट क्रिएट किया है यहाँ पे। आप चाहें तो इसको भी कॉपी कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस क्लिक एंटर एंड एक फाइल अपलोड हो चुकी है बकेट में, जिसको हम देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम इधर आएंगे, क्लिक मिनिमाइज, देन गो टू रिफ्रेश। ये हमारे पास आ चुका है फोटो जो हमने अपलोड किया था। नाउ टू द परमिशंस, यू हैव टू give access to everyone. So come down, click grant access. Now in new principles, you have to enter all users, paste it. For role, it should be storage object viewer. So just simply copy it instead of wasting time searching it. Just paste it here, select it and click save. Allow public access and the policy is updated. इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो शायद चेक में प्रोग्रेस में थोड़ा डिले हो सकता है। फिलहाल इधर नहीं हुआ है। सो this assessment is completed. Now to the task 2, we have to create the HTTP load balancer with Cloud CDN. So lab पे वापस आएंगे, search load balancer, load balancing is here, click create load balancer. Now हमें कहा गया है कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ लोड बैलेंसर में, जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर पे जाके हमें लोड बैलेंसर का नाम ये रखना है। सो क्लिक नेक्स्ट, 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 देन नेक्स्ट अगेन, क्लिक कॉन्फ़िगर। उसके बाद यहाँ पे हम लोड बैलेंसर का नेम डालेंगे। देन बैकएंड में हमें इस नाम का बकेट बनाने के लिए कहा गया है, तो इधर आएंगे, क्लिक ऑन बैकएंड, क्लिक क्रिएट अ बैकएंड बकेट, एडिट। यहाँ से हमें इस बकेट को सेलेक्ट करना है जो हमने जस्ट क्रिएट किया है। क्लाइंट टीटीएल, डिफॉल्ट टीटीएल, मैक्सिमम टीटीएल, हमें इन सबको 1 मिनट पे सेलेक्ट करना है। एंड
क्लाउड CDN आपको ध्यान रखना है कि ये इनेबल हो रखा है बाय चेकिंग नाउ। के बाद हम इधर आएंगे, फ्रंट एंड में हमें ध्यान रखना है कि ये सब वैल्यूज हो, उसके लिए हम यहाँ से क्रिएट विद कर सकते हैं, देन क्लिक ओके, देन गो टू फ्रंट एंड, check it, IPv4 Marial 80, and yes, protocol is also HTTP. So we'll come to review and finalize. And as it matches everything, click create. एंड हमारा लोड बैलेंसर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो हम यहाँ वापस आएंगे, क्लिक चेक माई प्रोग्रेस, and it is completed. Congratulations, the lab is complete. You can simply end the lab here. If this video was helpful, give it a like and subscribe our channel for more such solution videos.